नमस्कार। आज हमारे सामने भगवद गीता पर आधारित कुछ नोट्स और अंश है। हाँ, ये वही कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र में हुए प्रसिद्ध संवाद पर केंद्रित हैं। बिल्कुल। और कहानी का सार तो हम सबको पता ही है कि अर्जुन कैसे युद्ध से कतरा रहे थे। हाँ, क्योंकि विरोधी पक्ष में अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु थे। सही। और बस यहीं से ये पूरी गहन दार्शनिक चर्चा शुरू होती है। हाँ जी। तो हमारा काम है इन स्रोतों से मुख्य विचारों और शिक्षाओं को समझना, उनको निकालना, समझना। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते। जरूर। तो सबसे पहले ये जो अर्जुन की हिचकिचाहट थी, नोट्स के मुताबिक इसका असली कारण क्या था? हाँ, तो देखिए, स्रोत बताते हैं कि अर्जुन का मोह, मतलब अपने रिश्तेदारों और गुरुओं के प्रति जो उनका गहरा लगाव था, वो उन्हें बहुत दुखी कर रहा था। उन्हें भविष्य की चिंता सता रही थी। अच्छा। और यहीं पर धर्म की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, धर्म। गीता में इसका क्या मतलब बताया गया है? ये सिर्फ पूजा पाठ तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता के अनुसार, जैसा इन अंशों में भी इशारा है, धर्म का मतलब है कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी, व्यक्ति का सही आचरण। मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो सही एक्शन है। बिल्कुल। और अर्जुन के लिए एक योद्धा होने के नाते उसका धर्म था युद्ध करना, चाहे वो कितना भी भावनात्मक रूप से मुश्किल क्यों ना हो। भले ही सामने अपने ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे विरोधी अपने ही क्यों ना हो। ये धर्म की व्याख्या वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन नोट्स में आत्मा की प्रकृति पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, आत्मा या आत्मन, ये क्या है? इसके बारे में क्या खास बातें पता चलती हैं? स्रोत इसे शाश्वत बताते हैं, अविनाशी, अपरिवर्तनीय। मतलब ये कि आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही शरीर के साथ मरती है। शरीर सिर्फ एक वस्त्र की तरह है। अच्छा, जैसे कपड़े बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक श्लोक का भाव है ना कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लेता है। तो ये समझ शायद अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने में मदद करती है कि मृत्यु केवल शरीर की है। हाँ, ये एक तरह से उनके शोक और भय को कम करने का एक दार्शनिक आधार देती है। लेकिन फिर कर्म का क्या? अगर परिणाम इतने भयानक दिख रहे हैं, युद्ध के विनाशकारी नतीजे सामने हैं, तो फिर कर्म करने का यानी युद्ध करने का क्या मतलब? यहीं पर देखिए, कर्म योग का सिद्धांत आता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म मतलब अपना कर्तव्य करो, अपना धर्म निभाओ, लेकिन फल की इच्छा या उसके प्रति जो आसक्ति होती है उससे मुक्त होकर। फल से अटैचमेंट न हो। बिल्कुल। कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि फल से लगाव ही अक्सर दुख और बंधन का कारण बनता है। वो प्रसिद्ध बात है ना, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। ये अनासक्ति, ये डिटैचमेंट ही मन की शांति की कुंजी है। तो बस एक्शन लो, रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। लेकिन क्या यही एकमात्र रास्ता है? मुझे याद है नोट्स में ज्ञान और भक्ति योग का भी जिक्र था। हाँ, आपने सही पकड़ा। स्रोत बताते हैं कि कर्म योग के अलावा ज्ञान योग और भक्ति योग भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं। वो क्या है? ज्ञान योग है बुद्धि और विवेक के जरिए आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति पाना। ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि वो शाश्वत आत्मा हूँ। ओके। और भक्ति योग? भक्ति योग है ईश्वर यानी कृष्ण के प्रति प्रेम, पूर्ण समर्पण, उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाना। कुछ अंश तो भक्ति को सबसे सीधा और सरल मार्ग भी बताते हैं। अच्छा। हाँ, पर अंततः ये सभी मार्ग मोक्ष की ओर ही ले जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कर्म, ज्ञान, भक्ति, अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए अलग अलग रास्ते, पर मंजिल एक, दिलचस्प। बिल्कुल। इन नोट्स में एक और चीज थी, प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। ये क्या है और इनका क्या महत्व है? देखिए, ये प्रकृति की 3 मौलिक शक्तियां या मोड हैं। ये हर चीज में, हर व्यक्ति के स्वभाव, उसके विचारों, उसके कर्मों में मौजूद होते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। कैसे? सत्व गुण अच्छाई, पवित्रता, शांति और ज्ञान से जुड़ा है। रजस गुण जुनून, क्रियाशीलता, इच्छा और अटैचमेंट लाता है। और तमस गुण वो अज्ञान, आलस्य, जड़ता और भ्रम पैदा करता है। तो इन्हें समझना क्यों जरूरी है? इन्हें समझने से व्यक्ति अपने स्वभाव को पहचान सकता है और इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर आत्म सुधार कर सकता है। मतलब तमस और रजस को कम करके सत्व को बढ़ाना और फिर उससे भी परे जाना। गुणों से ऊपर उठना, तो क्या कोई ऐसी आदर्श स्थिति भी बताई गई है? मैंने एक शब्द देखा था, स्थित प्रज्ञ। हाँ, स्थित प्रज्ञ।
ये गीता में वर्णित एक आदर्श व्यक्ति की अवस्था है। वो कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सब द्वंद्वों में एक समान रहता है। मतलब विचलित नहीं होता। बिल्कुल, वो समता और अनासक्ति का प्रतीक है। बाहरी परिस्थितियां उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। ये आंतरिक शांति और स्थिरता की पराकाष्ठा है। कमाल है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें तो इन स्रोतों से गीता का सार क्या निकलता है? सार यही है कि अपने धर्म यानी कर्तव्य को पहचानो और उसका पालन करो, आत्मा की अमरता को समझो और फल की चिंता किए बिना। हाँ, और कर्म, ज्ञान या भक्ति, जो भी मार्ग आपके स्वभाव के अनुकूल हो, उसके द्वारा अनासक्ति, समता और आत्मज्ञान प्राप्त करो। ये जीवन के संघर्षों और दुविधाओं के बीच एक रास्ता दिखाता है एक तरह से। बिल्कुल, ये एक दार्शनिक फ्रेमवर्क है जिससे संतुलन और आंतरिक शांति पाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। हजारों साल पहले दिए गए ये उपदेश, ये शिक्षाएं आज की इस भागदौड़ भरी जटिल जिंदगी में कितनी प्रासंगिक है। कर्तव्य, अनासक्ति और आत्मज्ञान जैसी अवधारणाएं आज की चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। Welcome to this deep dive. Today we're looking at a collection of really thought-provoking texts, trying to explore something pretty fundamental, you know, our sense of duty, the actions we take. Yeah, and how we kind of fit into the bigger picture, society and all that. Exactly. And we've gathered, well, a really fascinating range of sources for this one. Yeah. We've got philosophical stuff, spiritual wisdom, insights from the Bhagavad Gita, for instance. Okay. But also various pieces with political and social commentary, and even some reflections on art and society, different cultures. Quite a mix then. So our mission really is to sort of extract the key insights, right, about navigating our obligations and all those sometimes conflicting expectations we run into. Right. We want you to leave with clarity, you know, understanding, not feeling buried under tons of info. Definitely. Okay, let's get into it. Starting with the Bhagavad Gita seems like a good place. So it's an interesting foundation. It really does. The Gita offers some, well, truly profound perspectives on duty, on dharma, as it's often called. Dharma, right. And there's this one part, it really stands out. It emphasizes this powerful idea that it's actually better to do your own duty, your own job, even if you're not perfect at it, than it is to do someone else's duty, even if you do that perfectly well. Wow. Okay, that's quite counterintuitive when you first hear it, isn't it? It is. It suggests there's this really deep link between like who we are and what we're meant to do. Exactly. So even if we're sort of struggling on our own path, there's more value there. More value than just acing someone else's role. Interesting. And dharma, you know, often translated as duty, it's broader here. It's also about your inherent nature, your purpose, the ethical order of things. Okay. And this idea, aligning with your own dharma, it connects really strongly to another key concept in the Gita, selfless action. Karma yoga. Selfless action. Yeah, there are verses that really stress acting without being attached to the results. Oh. The focus shifts. It's on the action itself, the process, you know, not what you're hoping to gain from it. That is a tough one, I think, for a lot of us. Oh, definitely. We're so often thinking about the reward, you know, the promotion, the praise. The outcome. Yeah, this idea of letting go of those outcomes. I mean, how does that actually work, practically speaking? Well, it takes a certain mental discipline, a shift in how you look at things, really. The Gita suggests that if you dedicate your actions to something bigger than yourself, let go of the ego's need for specific results. Right. You can actually find a deeper kind of fulfillment just in the doing. So it's not about being passive. Yeah. Or not caring. Not at all. No, it's about being fully engaged in what you're doing, but without being sort of controlled by wanting a particular outcome. Okay. Think of it like planting a garden. You do the work, tilling the soil, planting, watering. That's your duty, your action. Right. But you can't actually control the weather, can you? Or guarantee every single seed sprouts. So letting go of that attachment means focusing on doing your best in the process, the planting, the tending, not being obsessed with the exact number of flowers you'll get. That makes sense. It's about the effort, the intention. Precisely. Okay, but our sources also mention that life, well,
it isn't always simple. We often face conflicting duties. Absolutely. Very true. How does the Gita guide us when our obligations seem to pull us in different directions? Yeah, and this is where the text really acknowledges the struggle, the human condition. The core guidance, especially for Arjuna in his big dilemma, is essentially act according to your own nature, your svabhava. Think of it not like some rigid destiny, but more like your natural inclinations, your talents, what genuinely resonates with you. So your inherent qualities. Yes. The Gita suggests that aligning your actions with those qualities, well, it leads to more effective, more fulfilling contributions, even when the choices are hard. It's about understanding your own capabilities and then acting accordingly within a kind of broader ethical framework. Right. So it comes back to self-understanding, knowing yourself and your place. Deeply, yes. Okay, let's shift gears a bit. Let's look at the political and social commentary in our collection. What kinds of perspectives are we seeing there about societal obligations? Well, these sources give us a really wide range of viewpoints. Different takes on the individual's role in the community, our shared responsibilities. You see discussions about good leadership, how society should ideally be governed, the duties of citizens, often with contrasting ideas, about where power should lie or what different groups might owe each other. It builds on that individual duty idea from the Gita, but looks outward. Okay, and one of the excerpts, it brings up sectarianism. How does that affect this idea of duty? That's a really important point. Sectarianism, as the text points out, can really narrow down how we define duty. How so? Well, it often means prioritizing loyalty to one specific group or one ideology, maybe above broader ethical principles or universal responsibilities. I see. So it raises this critical question, right? How do our affiliations, the groups we belong to, how do they shape what we think we owe to society as a whole? And maybe to people outside our immediate circle. Yeah, that's a big one. There's also a very blunt statement in one piece. To please everybody is to please nobody. Yes, very direct. How does that idea fit into fulfilling duties and handling social expectations? Well, it's quite practical, isn't it? Very insightful. It suggests that if you try to meet every single expectation out there, Which is impossible. right, especially when they clash, you just end up being ineffective. You satisfy no one, least of all, perhaps, yourself. So applied to duty, it might mean that focusing on your core responsibilities, on fundamental principles, that's probably more productive than trying to bend to every single demand or opinion that comes along. It raises the question of where to draw the line then. Exactly. Where do you draw the line? Trying to meet societal expectations while still being true to what you believe is right or necessary. It's a constant balancing act. And what about the link between rights and responsibilities? Do the sources touch on that? They do. Generally, the material seems to present them as interconnected, two sides of the same coin, almost. Okay. The underlying idea is often that the rights and freedoms we expect, well, they make more sense, or are best understood, when they're paired with the obligations we have. Towards others, towards the community. A kind of reciprocal relationship. Yeah, that's a good way to put it. One often implies the other. Okay, interesting. Let's move to the third area then. Reflections on art and society. Yeah. How do these traditions, artistic or philosophical, tackle these questions of purpose and contribution? These texts really explore how different viewpoints, creative or philosophical, grapple with the individual's place, their purpose within that larger social fabric. We see inquiries into what makes a life meaningful, and how our unique talents, our perspectives can actually contribute to the community's well-being. And does art, in these reflections, critique societal norms around duty? Art often does that, challenges things. Oh, absolutely. Art frequently acts as that critical lens. It questions established norms, expectations, including those around duty. The texts we looked at, they touch on that potential conflict between, say, individual expression and the pressure to just conform. Right. And what's fascinating is how these artistic critiques can really challenge our basic assumptions about what's expected of us. And importantly, whether those expectations actually serve us well, individually and collectively. There was one quote that really jumped out at me. Every artist dips his brush in his own soul and paints his own nature into his pictures. Ah, yes. Beautiful quote. How does that idea, expressing our individuality, fit with our societal roles and duties? Well, that quote illustrates it beautifully, doesn't it? The idea that our individual nature, our unique perspectives, they're not just valid, they're essential.
essential to our contributions, even within defined societal roles. So it's not about suppressing individuality. Quite the opposite. It suggests that fulfilling our duties authentically means bringing our own talents, our perspectives to the role. And that raises another really important question for all of us, I think. How can we honor and express our individuality while still contributing meaningfully, responsibly to society? Yeah, that's key. This has been, wow, a really enlightening look through these three verse sources. As we start to kind of pull these threads together, what are some of the key themes, common threads, maybe contrasting ideas that jumped out at you about duty and action? Well, one thing that seems consistent across different sources is this emphasis on aligning our actions with our individual nature, our core principle. Right, like the Dharma concept. Exactly, or the artist expressing their soul. We also saw that inherent tension, didn't we, between individual desires and what society expects, and that very practical challenge of navigating conflicting duties. And like we said, the impossibility of pleasing absolutely everyone. True. Any key contrasts? I think a key contrast lies maybe in the focus. Some sources really emphasize selfless action, detachment from the outcomes, like the Gita, while others maybe highlight more the value of the individual contribution itself, that unique expression within a social context. Okay, so for you listening, trying to make sense of your own obligations, your actions, what are maybe a couple of key principles or questions to keep in mind from all this? Okay, well, first, maybe really consider where the obligation is coming from. Is it purely external pressure? Or does it genuinely resonate with your own internal values, your inherent nature? Good question. Second, perhaps reflect on your motivations. Are you acting from a true sense of responsibility? Or is it primarily driven by wanting a specific result or, external validation? But why? Exactly. And maybe finally ask yourself, how can you bring your unique strengths, your perspectives, to fulfilling your duties in a way that feels meaningful to you personally, but also beneficial to the wider community you're part of? Yeah. And it's crucial, I think, to remember context matters hugely. What's seen as a duty in one framework might look very different in another. That's so true. Understanding the background is key. This has been incredibly insightful. It's just remarkable how these diverse texts from different times, different cultures, still offer such relevant ways of thinking about these fundamental challenges. Understanding our place, our responsibilities, even today. Absolutely. And by engaging with these varied viewpoints, we just develop a richer, maybe more nuanced understanding of the complexities involved and how enduring these questions really are. Definitely. Okay, so on that note, here's maybe a final thought for you to chew on. Reflecting on all these different ideas we've explored, how might you find a way to reconcile obligations that seem to conflict in your own life while still staying true to your own core values? That's a good one. It's a question worth exploring, I think, long after this deep dive ends. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਅੱਜ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਯੋਧੇ ਅਰਜਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੀਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਉਹ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਤੱਵ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹ ਦਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਰੋਤ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
बिल्कुल, मोक्ष का मतलब ही यही है, इस जन्म मरण दे गेड़ तो आजादी, परम शांति। ते इन्हां नोट्स मुताबिक गीता 3 मुख रस्ते दसदी है। योग कहंदे ने इन्हां नूं। पहला हैगा कर्म योग। ਇਹਦਾ मतलब है अपना काम अपना फर्ज करी जाओ, पर फल ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ, क्योंकि वो मोह वो जुड़ाव ही दुख दिंदा है। अच्छा, यानी कि कम करो पर नतीजे बारे ज्यादा ना सोचो। हाँ जी, बस अपना कर्म करो निस्वार्थ होके। फिर दूसरा हैगा ज्ञान योग। ये हैगा सच्चे ज्ञान राही मुक्ति, समझना कि आत्मा की है शरीर की है, इन्हां दा फर्क की है, ते अंतिम सच्चाई जिसनू ब्रह्म कहा गया उसनू जानना। ते तीजा हैगा भक्ति योग। ये परमात्मा प्रति पूरा प्यार पूरी श्रद्धा, इत्थे भगवान कृष्ण दी गल है, पूरी तरह समर्पण कर देना। कई बारी इसनू सब तो सीधा रास्ता भी मन्निया जाता है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਤਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚੰਗਿਆਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਨੂਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਮਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਸੁਸਤੀ, ਭ੍ਰਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਥਿਰ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ। ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਨਾਸਕਤੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਮਤਾ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੀਤਾ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਮ ਸੱਚਾਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ, ਉਹੀ ਆਸਰਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੋਕਸ਼ ਪਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ, ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਮਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਧਰਮ, ਆਤਮਾ, ਕਰਮ, ਮੋਕਸ਼, ਯੋਗ, ਗੁਣ, ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 3 ਗੁਣ ਸੀ, ਸਤਵ, ਰਜਸ, ਤਮਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, बहुत बढ़िया नुक्ता है, सोचने वाली गल है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू दर्शन की एक महान और पूज्यनीय ग्रंथ है, जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक भाग है। यह भगवान श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच हुआ एक गहन आध्यात्मिक संवाद है, जो महायुद्ध के आरंभ से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर होता है। पृष्ठभूमि: महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला होता है, तभी अर्जुन गहरे शोक और नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं। वे अपने ही संबंधियों, प्रिय गुरुओं और वृद्ध जनों को शत्रु पक्ष में देखकर विचलित हो उठते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। इसी संकट की घड़ी में वे अपने सारथी श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। मुख्य शिक्षाएं: भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्तव्य और मोक्ष के मार्ग पर आधारित दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ये उपदेश कर्म योग, कर्म का मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग, और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग के रूप में विभाजित है। आत्मा की अमृता अध्याय 2। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा स्वरूप आत्मा न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। यह ज्ञान मृत्यु के भय और शोक से ऊपर उठने में सहायक होता है। निष्काम कर्म
कर्मयोग अध्याय 3 से 5। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अपने धर्म कर्तव्य का पालन करें, परिणाम की चिंता किए बिना। जो कार्य ईश्वर को अर्पित कर निष्काम भाव से किए जाते हैं वे बंधन नहीं पैदा करते। सच्चा संन्यास कर्मों का त्याग नहीं बल्कि फल की अपेक्षा का त्याग है। ज्ञान का मार्ग ज्ञान योग अध्याय 4 और 6। कृष्ण आत्मा और शरीर के भेद को समझाते हैं और ध्यान व अनुशासन द्वारा मन को नियंत्रित करने की महत्ता बताते हैं। वे यह भी प्रकट करते हैं कि वे स्वयं संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत हैं। भक्ति और दिव्य प्रेम भक्ति योग अध्याय 7 से 12। भक्ति योग को कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है। जो श्रद्धा और प्रेम से भगवान को स्मरण करते हैं और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करते हैं वे उनकी विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप विश्व रूप दिखाकर अपने सर्वव्यापक दिव्य स्वरूप का अनुभव कराते हैं। प्रकृति के गुण और परम समर्पण अध्याय 13 से 18। कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व शुद्धता रजस उत्साह और तमस जड़ता का वर्णन करते हैं जो प्रत्येक प्राणी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इन गुणों से ऊपर उठना आत्म मुक्ति के लिए आवश्यक है। गीता के अंत में श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। सार भगवद गीता का मूल संदेश है, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो, आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानो और ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण विकसित करो। यह मार्ग दुखों से मुक्ति दिलाकर चिर शांति और मोक्ष की प्राप्ति कराता है।